Sorry for that. There was an issue. So what we have done is we have reversed our positions right now. I'll show them to you now. We have reversed our position now. We are short calls and we have bought puts. We have an order to sell one call at 91.5. So let's see if we get filled. We have been filled at 91.5. Cancel our order to buy puts at 68. I'm going to exit our positions now because it is now by. It's not at 70, and I'll enter one more lot. Sell at order one at 768. Instead of 70, I'll modify that order to get executed at 69. 5. We have been filled a two lot short at puts. So basically, our stop loss was hit in, but we are now re entering again. It's around 94.5. Let's see, we get filled. Yep, we have been filled. We have an order at 93.5 pending. So let's see if it also get filled.
We have been filled at 93.5 as well. That's fine. Place an order now at 90. Been filled at 93. I'll place an order to get out of one lot at 99.5. Let's see if we break the lows now. Inputs. Let's see. Now they should break the lows. 65.2. So let's see. We have our hand on the exit order of cover order of short put. So let's see. Let it break the lows. So we'll exit partially.
The new hourly candle is also about to start at 1 p.m. Let's see. Let's let it come into 68, 67, 66, 65. Let's see. See, there's a big order at 68. Let it get absorbed first. When they get absorbed, it just tells us that sellers are aggressive right now. Let's see. It should go now. A new candle has started, hourly candle now. Let's see. We have a sell order for call at 101.5. So let it also get triggered. It should get triggered now. Waiting for it to get triggered. It should get triggered at 101.5 now. Yep. I'm modifying that order to 100. Let's see if it get filled at 101.5 now. 100.5. We have exited one of our positions. We now let's confirm our net position so far. Place an order to exit our position above the day's highs 105. So I'll put an order at 107.5 for one lot. We have only we have two puts, so let's see. Let this break 60. We'll square off our put as well.
Sorry, 62.5 to 63 range. I have my hand on exit button for the cover order. So let's see. It's not breaking 65 yet. Buy a call. Buy a call at 96. Not been filled yet. We've been filled yet. Yep, we have been filled. Place an order to get out of this call at 100. We have an order at 100.5 to get out of one call, and we'll start scoring off up short puts as well because the it is really making me frustrated right now. So modifying the calls at 99 now. And 1075 to 104.5 now.
Let's see if we get filled at 99.5. It's at 98 right now. Cancel the order at 99 right now. So let's see. I'll exit it from here now. We have exited that at 97.5. Actually, I'm not comfortable right now due to market is behaving very differently. It should move, but it is not. So that's the issue. Start reducing our puts as well now. Let's see if we break 65 now.
Let's see if it breaks 65. There are some buyers at 67 which are not letting up. Once their order flow gets absorbed, market will resume. So now let's see. Look at that. The way it reclaimed 70, something is definitely weird. See the volatility right now. Market also doesn't know where it is gonna go. Let's see. Placed stop loss order for a position, and in ports, I'll think now focus on exiting this position. And it has not been a good day. We are losing money today. We are at cost for our short ports right now. We entered at this level only. So let's see. Needs to trade above 95. 13,000 calls should be trading above 95, and puts should be below 65. Then I'll be sure that it may be going up. But right now, let's see. It is going there. So let's see.
Now the buyers are in the system. Let's see. Yeah, let's see now. See, there's a big order at 66. Let's see. The writers are aggressive enough to fill that order. 'Let's see what happens now. 67 is not breaking, 66 is not breaking now. Let's see. Nope. Buyers are not strong enough today.
66 is not breaking. 66, 65 levels. It is at our cost only right now. VIX is also up almost 5%. Now the buyers are stepping up, but let's see. $65 needs to break. Then now it is going. Yep. 60.25 is the low. We have made a new low. Low inputs. I'm exiting one lot. At 59.70, we have exited one lot. Modify. The call. Sell one call at the highs 107.5. About to make the highs now. We've been filled most likely. No, 1.6. Currently, we have one short put which we are going to keep, and we have a sell order at 107.5 for one call. And after that, let's see what happens.
Let's see. It is at 101 right now. So we have an order at 107.5 and the high currently is at 105.95. So let's see. Let's see if we get filled now at 107.5. What I'll do is I'll modify the order to 104.5. Let's get out of this position partially. It's at 104.5. So I'm going to do that. I'm going to keep it at 107.5. Let's see. But I'll keep the modify window open. So keep the modify window open. So in case I don't see any momentum, I'll exit it as well. Kept it at 101.5. Let's see. Kept a buy order as well at 96.5.
Modified that order to 104.5 now. Cancelled all our orders right now. Only we have one order at short port cover order, which we can exit, and we have only two positions now in calls. So I'll place an order to exit them as well. So let's see. 7.5 is the low in puts. Place an order at 109.5. Let's see. Sorry. Please at 102.5 to exit. We have been filled out of one of our positions at 102.5. Now we'll be trailing one long call, and we have one short put. Let's see if we break 60. Voltage is near 52-week highs, less than 4% away. Nifty Pharma is also made 1 week high right now. Wow. 60 is not breaking now.
the stocks that we have chosen, their trailing stop losses have also not been hit yet. Let's see if we break 60 now. At 60, 65, 60.5, 60.6. Nope. The buyers are coming up, so let's see whether they are strong enough. They have started to lift, increase the bid sizes. At least that what I saw, but it could be a spoof, so we don't know. We can only confirm by seeing the price action at that point of time. So yeah, we are breaking 60 now. Let's see. Placing an order at 112.5. So just in case it spikes, we can get filled. Let's see. But it's not breaking 60. See? High is at 106 right now, 105.95. So 106 would be the new high. Place an order at 102 to exit this position now. We have been filled. Now we don't have any position in calls, zero position in calls, and we have only one position in put now. And apart from that, we might be having two stocks. Yep, one short put, and we are short Indigo and long RBL Bank.
to be exiting our puts as well now. Let's see if they break 60. I place an order to exit. I've exited at 63.05. Now we don't have any position except two short stops. So I'm going to be now. Let's see what is happening. $223.65. 223. 223.65. So we have modified our stop loss for RBL Bank. Oro Pharma is at 1 week highs right now. Where is RBL Bank? Yep. 223.45, and we have placed an order at 223.65. So it's at break even right now. Keep a order at 106.05 for call, just in case we get some momentum. Let's see our order book. Yep, a pending buy order. If it triggers, okay. If it doesn't trigger, then also it is okay. So now I'm going to be eating my lunch. I'm sitting on my desk only. And we have an order at 106.05 just in case the high triggers. RBL Bank is also up 6% plus. Rest I'll put on something like a news channel. Ads are coming up now. What's common to these smiles is the technology that connects them. Smart technology from Kirloskar, enriching lives one smile at a time. बॉस काम शुरू करना है और इसे भी जरा चेक कर लो प्लीज। बहुत टेंशन है। ये तो नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड है, नो टेंशन। मतलब
इंजन ऑन हो या ऑफ, इसका 3 स्टेज प्रोटेक्शन चले नॉन स्टॉप। बॉस क्या आइडिया दिया, नॉन स्टॉप। सबको काम शुरू करना है, हम सबको बाइक्स देंगे तो चलेंगे नॉन स्टॉप। आने वाले कल की सुरक्षा में हम आपका साथ देंगे। कैस्ट्रॉल एक्टिव विद 3 स्टेज प्रोटेक्शन। सोच कर समझ There must be ads coming on Z Business, so that is why nothing is. Once ad finishes, you will be able to see the news. Let's see if we get triggered now at days high. We must have been triggered. Yep, we have been triggered at 105.95. We have been triggered. But the momentum has not carried through. So that's an issue. Order book is over here. बाजार में रिकॉर्ड तेजी, निफ्टी पहली बार 13,000 और सेंसेक्स पहली बार 44,400 के पार। मार्च के निचले स्तरों से बाजार में 73% का उछाल। 500 अंकों के उछाल के साथ बैंक निफ्टी 29,500 के करीब। एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई में 3% तक की तेजी। Let's see if we get filled
held at ऑटो इंडेक्स 6150. एक साल और 7 महीने की Yeah, we ऊंचाइयों have पर the same. 5.5% चढ़े M&M और आयशर मोटर्स। यूरोप में 1% की तेजी, डाउ फ्यूचर्स 250 अंकों का उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। Yes, in order to exit this उत्पादन position बढ़ने के अनुमान से मारुति में 3% का उछाल। जिससे खास बातचीत में मैनेजमेंट ने कहा एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट में पेट्रोल मॉडल्स की डिमांड बढ़ने से मिला कंपनी को फायदा। $1800 करोड़ के वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भेल ने लगाई बोली, 44 बोगियां बनाने का प्लान, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। चीन और हांगकांग से आने वाले निवेश पर सख्ती, करीब 13,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर लगी रोक। डिस्काउंट पर ऑफर फॉर सेल के ऐलान से इंगरसोल रैंक करीब 5% फिसला। 578 रुपए 60 पैसे के फ्लोर प्राइस पर प्रोमोटर्स बेचेंगे 4.5% हिस्सेदारी। कोरोना वैक्सीन वितरण पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की दूसरी वर्चुअल बैठक जारी। पहली बैठक में सबसे ज्यादा 8 प्रभावित राज्यों के साथ हुई बातचीत। और मदरसन सुमी का कारोबार को डाइवर्सिफाई करने का प्लान। न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में कहा मैनेजमेंट ने अगले 5 सालों में मेडिकल, आईटी और लॉजिस्टिक्स पर रहेगा फोकस। बाजार के लिए एक और ऐतिहासिक, जहां सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर करते हुए कारोबार। बड़ा सवाल है कि मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर और एफआईज की खरीदारी क्या आज 13,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगी, और ऐसे में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में कल और परसों के लिए क्या करें तैयारी, ये रहेगा आज का खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तेजी है, निफ्टी सेंसेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है। वहीं बैंक निफ्टी में आज बाउंस बैक आ रहा है, 550 अंकों का उछाल है और ग्लोबल क्यूज से भी पॉजिटिव संकेत है। तो सर, इतने अच्छे संकेत आ रहे हैं, बताइए आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रहेगा, क्या है बड़ी बातें? दीप, देखिए फिर से बाजार में रिकॉर्ड बनाया यार। अभी बात करते करते और शो की शुरुआत करते निफ्टी पहली बार 13,050 के पार निकला है। अब 13,054 ये नए आंकड़े के तौर पर आ चुका है इतिहास में, और 44,500 के लेवल को पार किया है सेंसेक्स ने। 44,512 ये है वो लेवल जो आपको दिखेगा ऊपर सेंसेक्स के लिए तेजी की तरफ, और 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती सेंसेक्स में, 125 अंक मजबूत निफ्टी है, और बैंक निफ्टी 550 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ ये आपके लिए इस वक्त का बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और चौतरफा खरीदारी है। ऑटो शेयरों में तेज रफ्तार है, मारुति, आयशर, M&M निफ्टी में अपना योगदान देते हुए। वहीं लगभग सारे सेक्टर्स तेजी में इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा रफ्तार में, और ये तेजी आ रही है पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। यूरोप 1% मजबूत है, और डाउ फ्यूचर्स आज फिर से एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में होगा। इस बात के पूरे संकेत देता हुआ 250 अंकों के मजबूत उछाल के साथ डाउ फ्यूचर्स इस वक्त दीप कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, तो शानदार तेजी आ रही है। 13,000 तो आ गया अनिल जी निफ्टी पर। अब बताइए बैंक निफ्टी भी वो 30,000 तो ज्यादा दूर नहीं है। आज सुबह आप बात भी कर रहे थे 29,500 के ऊपर अगर टिका रहा तो मूड बदलना चाहिए। क्या वैसी संकेत अब बैंक्स पे भी समझने चाहिए? दीप, देखिए सुबह आपने यही सवाल पूछा था, मैंने कहा अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो 2 दिन तक था कि बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगा मंदी की तरफ। लेकिन आज देखिए बैंक निफ्टी ने अपना करेक्शन पूरा किया। आज एक करेक्शन पूरा करके जो तेजी अच्छी होती दिख रही है, उसमें आपको 2 चीज़ों को आज क्रेडिट देना चाहिए। एक, बैंक निफ्टी ने अपनी अंडर परफॉर्मेंस कम किया। दूसरा, आज जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं बड़े दिग्गज एफआई ब्रोकरेजेस की, वो बड़ी जबरदस्त है। आप देखिए आईसीआईसीआई पर जेफरीज ने टारगेट बढ़ाया है, एक्सिस पर 610 का टारगेट 700 किया है, एचडीएफसी बैंक पे सीएलएसए ने 1 महीने में 2 बार टारगेट बढ़ाया। तो कहीं कहीं बैंक्स पर जो जिस तरह का टारगेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो बैंकिंग शेयरों में जोश भर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि बैंक निफ्टी में बाजार थोड़ा हल्का है,
तेजी और मंदी दोनों ही तरफ की पोजीशन काफी कम है। और जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि कल आखिरी आधे घंटे में बैंक निफ्टी में काफी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई है, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है। और जैसे ही वो पोजीशन छोड़ी है और वो आपको बाजार हल्के होते दिख रहे हैं, और हल्के बाजारों के लिए ऊपर आना आसान होता है, और वही इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो पूरा एक्शन हुआ है वो एक्शन सिर्फ इसी बात से है और इसी तरफ है कि बाजार हल्के हुए हैं बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी की लीडरशिप वहीं से आती दिख रही है। जी दी बिल्कुल, तो लीडरशिप बढ़िया आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी पर भी एक्शन अच्छा है। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सर, एक छोटा सवाल और, क्योंकि लेवल्स की बात निकल कर आ रही है, पहले 30,000 किस पे आएगा? डाउ फ्यूचर्स जहां पर अभी सिर्फ 200 अंक दूर है 30,000, या फिर निफ्टी बैंक जहां से 400 अंकों की दूरी है? हम तो चाहते हैं कि जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी पर पहले आए। हमारे लिए तो फायदे की बात वही है कि बैंक निफ्टी पर पहले आए। और वैसे भी देखिए, डाउ उतना तो भाग नहीं सकता जितना बैंक निफ्टी भागता है। तो मेरी बेट और मेरा दाव बैंक निफ्टी पर होगा कि डाउ पर, और उम्मीद करता हूँ वहां पहला आता हुआ दिखे। आइए, भसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तब तक जल्दी से पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और तब तक भसीन साहब को करते हैं कनेक्ट। आइए, स्वागत करते हैं वागले जी का भी। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। औरोबिंदो फार्मा में मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है। 880 881 का भाव है, यहाँ से लेकर 887 877 तक बाय करें। मेरा स्टॉप लॉस 870 के नीचे का होगा, 869 का, और 910 का मेरा टारगेट होगा। 210 के टारगेट के लिए औरोबिंदो फार्मा में करें खरीदारी। ये है राय वागले साहब की तरफ से। आइए, वसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका भी स्वागत, और वसीम साहब से भी लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स बिगुल के साथ। बताएं सर। वसीम साहब स्वागत है आपका। फिर से रिकॉर्ड हाइज पर है बाजार। बताइए सर, आउटलुक और साथ ही अपडेट। तो सर, अब तो एक्सपायरी है और ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हैं, और फॉरेनर्स की आपने देखा ईटीएफ फ्लोज आर वेरी स्ट्रांग। बट जैसे आपको कहा, यहाँ से करेक्शन जो होगी थोड़ी सीवियर हो सकती है, तो कीप योर हेजेस गोइंग। जब भी हमने 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 जैसा एक कॉन्क्रीट नंबर देखा, उसके बाद करेक्शन शार्प रही है। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कॉशन हियर कि अपने प्रॉफिट को जरूर प्रोटेक्ट करना याद रखना। अनिल जी, अपडेट ये है कि मैंने आपको सुबह मुथूट कहा था 1126, वो 1165 बिक गया। 4% आपको गेन है, बुक कीजिए प्रॉफिट। गोदरेज कंज्यूमर में बने रहिए। गोदरेज प्रॉपर्टी कल आपको दिया था 1140 बिक गया, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1175 पे का, 1075 पे का था। अब आप कहें तो 2 कॉल है, दोनों बाय की, और दोनों मेरा मन वाला एक यूटिलिटीज है और एक फार्मा है। आई थिंक दे आर द वंस विच आर एक्चुअली गोइंग टू गिव लॉट ऑफ वैल्यू। आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुथूट वाला कॉल बहुत ही जबरदस्त था सर, क्योंकि सुबह जिस तरह से कमजोरी दिखा रहा था, उस समय लेने की हिम्मत करना बड़ा काम था। एकदम सही वक्त पर आपने एंट्री की राय दी। मुथूट फाइनेंस एकदम दिन के लो पर ही था सुबह जब आपकी कॉल आई। बताएं सर, अब नई फ्रेश कॉल सर। सर, हम तो सही टाइम पे ही एंट्री देते हैं। आपको 7,940 पे कहा था निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, और उसके बाद आप देख लीजिए, भगवान ने साथ दिया और आपका साथ रहा। जिसने जी टीवी देखा उसने नफा कमाया। सर, तो पहली कॉल होगी बायोकॉन। So guys, I'm back from after eating my lunch. So we have one lot of call and one lot of short put. So put has been shorted at 60.5 and call is long from 106. To buy one call now.
Place an order at 100.05, sorry, 100.50, which has been filled. I'll place an order to square off this position as well. At 106. An order at 106 and 114.5. So let's see if they get triggered. Stop loss in Indigo has been hit, so we don't have any position in Indigo, and we just only have one position in RBL Bank right now in terms of stocks. Initiate a short put. $61.5, but let's see, place it at 61. Let's see. Yep, we have been filled. No, we have not been filled yet. Yep, now we have been filled. Let's see. If we break 60, that would be good sign. Modify our order from 106 to a smaller number. Modify it to 100.
We have an order at 103.5 and 114.5. 103.5 should get filled. Waiting for the price inputs to trade below 60. So let's see if it sustains below 60 now. 103.5 should get filled now. Yep, we have been filled at 103.5. Let's see if we break 60. I'm hoping for break of the low 55.3. So I should square off one position at 55. But since it is having a lot of trouble going down, so I may even close partially even earlier than that. So let's see. For calls, high is at 109.8 and we have a square of order at 114.5. So let's see. Below 57.3, we should go lower. Let's see if it trades below 57. The put. I have my hand on the exit order for cover order, exit button for the cover order. So let's see. Let's see. Like I've already told you, below 57 we're gonna form new, definitely we're going to be towards the lows inputs, but 57 is not breaking.
about to form new lows now. Inputs. I've exited partially at 54.95. One lot input. And we have one open order at 114.5 in our calls. So let's see. I'm going to modify that because it's taking so much time. At 110 we'll exit. Yep, we have exited. Now we don't have any position in calls. We just have one position in puts. We are short puts. Apart from that, I think we only have position in RBL Bank now. Let's see if we break 50 inputs. After that, I'll square these positions. Right now, Hindalco is less than 1% away from its 52-week highs. HDFC Bank is at 1 week highs. Today has been very choppy day. By that I mean it was sideways for most of the day.
we are going to modify our trailing stop loss for RBL Bank to 224.3. Yeah, 224.25. 224.25. We have modified our trailing stop in RBL Bank. They're coming to sell again. So let's sell the puts again. Our view for today was that it can potentially trade towards 13,055, which has been achieved now. Let's see if we trade below 50 now, finally. No. Metal index, Nifty Metal is less than 3% away from its 52-week highs. RBL is making 1-week highs right now. So, and they're coming to sell the puts. That is, market is trading higher. Let's see if we manage to break 50. You must have seen the relatively higher order size at 54 when it was in 53s. So market basically goes towards the order flows. Where there are higher orders, it goes toward those areas.
it's not going towards the lows inputs. At 54, there is a big order, 13,000 relative shares. So let's see if market trades through that. These orders at 55, there is a big order, 25,000 shares. So it's gonna go towards 55 and try to fill that. So market basically exists to facilitate trade. So wherever there is order flow, market is going to go over there. And now, of course, there is spoofing. So we can't be 100% sure that it is correct. What we are saying is 100% accurate. Of course, there is HFT and there is a lot of spoofing. But the general consensus, which I have mentioned, is that holds true that wherever there is large order flow, market attempts to trade in that zone basically. So now we are going towards the new lows in puts, 51.6. Let's see if it breaks the lows now. HDFC Bank 1 week highs, everything is moving up. So now we're about to make new lows in puts. Let's see. Yep, we have made new lows. Let's see if we break 50. No, we haven't yet. I've exited this position, 51.65. Now we don't have any positions. $224.85.
verify 224.85. So currently we have only one position, which is RBL Bank, and we have a trailing stop loss at 224.85 levels. Apart from that, we don't have any positions left now. It's a break-even trade for us. Divi's Lab. Three, 5, 2, 4. We have not been filled yet in Divi's Lab. We have a sell order at 3523.45. Let's see if we get filled. Nope. We are missing this trade. That is why I prefer stop loss orders in stocks. So you get filled immediately. Now we are trying to get in. Since Trice is away, we'll be very conservative. What I'll do is I'll buy 2 shares and I'll sell this thing at 20.5. Place an order at 3520.5. It should get filled now. We have been filled 2 shares. Since our entry price was 3524, so we have 4 rupees slippage. So that is why I have shorted less quantity, and our stop loss is going to be 3541 plus 3540. So there you go, we have a stop loss for our trade as well now. Apart from that, there is no other trade for us. So stop losses in the system, so now we can relax. When we were holding them, they were not breaking, now they have broken. So it's okay. I've taken the puts out of my watch list. So
So Divi's Lab, our order signal was generated at 3524. So I was not able to get a fill for 3524. So I reduced my size to 2. Instead of risking overall 500 for the script, we risked only 250 for the script with 2 shares. So, and we have a stop loss order in as well. So let's see. Biocon has been a good trend today. And Infratel, yeah, it is trading lower only. And the weekly, RBL Bank is the only stock which is performing relatively better right now for us. We wanted to short 5 shares. So we shorted 5. So now we'll add 3 more shares at 3527.5. Sorry. 38. Let's see if we get a fill. Place an order for 3 shares at 3528. So let's see if we get filled. Nope. We have been filled at 3524. So we'll modify this. Instead of 2 share, we'll keep it as 5. So there you go. We have a full position in Divi's Lab now.
Market is at 13,050. So for intraday, our levels have been met. So nothing for us right now. I'm going to be putting on the news channel right now. वेदांता लिमिटेड, जो मैंने दिवाली के दिन ट्रेडिंग पिक के तौर पर दिया था 115 के टारगेट के लिए, वो टारगेट 3-4 दिन पहले हिट हुआ। एक करेक्शन पूरा करने के बाद स्टॉक आज वापस मजबूती से भाग रहा है। 117 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आपको खरीदारी करनी है। यहां से लेकर 112 रुपए तक आराम से आए, धीरे धीरे। बर्थडे गिफ्ट है, और बर्थडे गिफ्ट एक ही दिन के लिए नहीं, आराम से पोजिशनल पिक है। 117 से 112 की रेंज में आप यहां पर खरीदारी कीजिए। 108 का स्टॉप लॉस लगाइए। 120, 125 ये लेवल हैं जहां तक वापस से एक बार स्टॉक पहुंचना चाहिए। 120, 122 का टारगेट शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है वो रख सकते हैं, और 128, 130 का टारगेट पोजिशनल ट्रेडर रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार धीरे धीरे वेदांता जो डीलिस्टिंग के पहले के दाम थे उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ सकता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं 2000 के लिए ये, तो वो कर सकते हैं 120, 122 के टारगेट के लिए ट्रेड, और 128, 130 का टारगेट, और आराम से खरीदें। बर्थडे अभी का भी ऐसा नहीं कि इसी मोमेंट में 117 से 112 की रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, और उसके बाद आपको ये कुणाल जी मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अगर आपको चार्ट्स में मंजूर है तो कबूल करिए। अनिल जी बिल्कुल कबूल है, और मैं और राकेश जी इस पर अनिल जी चर्चा कर चुके हैं, और हम लोगों की मंत्रणा में ये स्टॉक कहीं छूट गया। अनिल जी बहुत ही बेहतरीन अनिल जी आपने स्टॉक चुना है, और पूरी तरह सहमत हूं, और आप बहुत ही सहर्ष अनिल जी आपका ये गिफ्ट मैं स्वीकार कर रहा हूं। जी राकेश जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही है कुछ। देखिए अनिल जी, आपने एकदम परफेक्ट गिफ्ट भेज दिया है कुणाल जी को। कुणाल जी की नजर वेदांता पे थी, इनकी 2 बार अर्जी आई, और मेरा रिप्लाई ये था कि वेदांता में अनिल जी मैंने ये पाया है कि सबसे पहले आप पकड़ते हैं। तो मैंने कुणाल जी को रिप्लाई यही बोला कि अनिल जी तो वेदांता पे बाय कॉल दे नहीं रहे हैं, और आप चार्ट कॉर्नर ले रहे हो, इग्नोर करो। तो अनिल जी उनके जो मन की चाहत थी वही स्टॉक पिक उनको जन्मदिन पे गिफ्ट में मिला। यही चीज अनिल जी हाईलाइट कर रहा था मैं। क्या बात है, अरे वाह वाह, गजब, क्या बात है। ये हुई ना बात। तो चलिए ये हमारे विचार मिलते हुए, आइए सुमित जी के साथ भी मिलाते हैं विचार। सुमित जी का सुपर हिट देखते हैं, सुमित जी का कौन सा स्टॉक है इस वक्त। बताएं सुमित जी। अनिल जी मुझे भी शामिल कर ले आप लोग की इसके अंदर, वेदांता वाली कॉल के अंदर, और मेरी तरफ से भी गिफ्ट ही समझे कुणाल जी के लिए, क्योंकि ये स्टॉक अब यहाँ से, बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक अब यहाँ से मोमेंट दिखाने वाला है, और ये स्टॉक अब यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी करने वाला है। वेदांता में अनिल जी लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, और स्टॉक यहाँ से ऊपर में 120 रुपए से लेके 125 रुपए तक का मोमेंट दिखाने को तैयार है। तो स्टॉक के अंदर अनिल जी मैं बिल्कुल आपको समर्थन, आपके साथ है मेरा व्यू। इसके अंदर यहाँ से तेजी करे, डिप आती है खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। 120 से 125 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और अनिल जी जस्ट याद दिलाना चाहूंगा, ये सेम पीक हमने 96 रुपए 97 रुपए में पकड़ा था, और दोनों ने साथ में बाय दिया था 105 से 110 के टारगेट के लिए, और अब ये यहाँ से वापस बाय बन रहा है 120 से 125 के टारगेट। Almost 229. That days highs as ओके, 120, 125 के टारगेट के लिए वेदांत, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। एक मिनट अरे समझना पड़ेगा भाई साहब, ये सब है ना, पता चला स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो अदीप जी ने दिया था, मैंने तो दिया ही नहीं। तो आप समझा करो दीप, ये अभी मेरे साथ थोड़ा टाइम से आप समझने लगोगे कि कहाँ किस किस को पकड़ना है। जी स्टॉप लॉस तो बताओ।
नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है अनिल जी, स्टॉक चलेगा अनिल जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम है और पूरा मेटल सेक्टर मेरे को मजबूत लग रहा है और वेदांता सबसे पीछे और सबसे लास्ट में चल रहा है, तो 111 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 120 से 125 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट। और जब आपको गिफ्ट बहुत पसंद आया हो, आमतौर पर देखिए पहले गिफ्ट मिलता है जिसकी भी बर्थडे होती है और उसके बाद वो रिटर्न गिफ्ट देता है, और जो आदमी बर्थडे वाला रिटर्न गिफ्ट देता है वो ये सोचता है कि पहले मैं देखूंगा मेरे गिफ्ट कैसे आए, अगर मेरे गिफ्ट अच्छे आए तो उस हिसाब से मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा। वो कई बार होता है ना कि शादी में जाते हैं, आप लिफाफा रखते हैं, फिर वो लिफाफे में खोल के देखते हैं अच्छा इसने इतना दिया, अब इसके हिसाब से मुझे कितना देना है। तो कुणाल जी आपने ऑलरेडी बोल दिया, बंसल जी ने बोल दिया, सुमित जी ने बोल दिया कि गिफ्ट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो अब आपको रिटर्न गिफ्ट उतना ही उससे बढ़िया देना है, उसकी आप तैयारी करके रख लीजिए। तो हमें आपके रिटर्न गिफ्ट का पूरा इंतजार है, वो जरूर आपको लेके आइएगा। चलिए आइए, इस बीच न सिर्फ सेकेंडरी मार्केट बल्कि प्राइमरी मार्केट भी है भरपूर एक्शन में। ढेर सारे आईपीओ हैं जो एक के बाद एक बाजार में उतरने को तैयार है, बाढ़ आने। Market is our RBL Bank is at days highs now. It's going up. I'll start squaring off this position now partially. Five shares I'll square off at 230.75. $7.1, 7.05. So we have modified our stop loss for 20 shares and put an order at 35 to square off our position. There you go. We have placed an order at 230, 31.5 and 30.7.
Private banks have made 1 week highs. Coforge, RBL Bank, Hindalco is near its 52-week highs. JSW Steel is near 52-week highs. Here. 85% scripts are up. Sorry. Out of 137, 86 scripts are up. Futures 91 are up out of 148, which is okay. India VIX is the highest percentage gainer today. Nifty Bank 2.4%, Nifty Realty It is interesting that India VIX is rising today. There are some kids arguing in front of my home office. Let's see if we get filled now at 230.25, 231.5 and 232.5. Let's see. Nifty's movement is up for the day now. It's almost 3 o'clock right now. Five.
filled. I'm going to exit now. It's 3 o'clock. Sorry, cancel this. Cancel. Cancel everything. Now we're going to square off our positions. So we have squared off our positions for the day, and now we don't have any position left. So today we traded calls and puts as usual. Apart from that, we traded stocks as well. RBL Bank, Indigo, Divi's Lab and Naukri. So now we are going to be closing for the day up 3,500 rupees. So now I have closed everything. Now I will just be observing the markets. I will not be making any trades now. Confirm. We don't have any trades now. We have logged our workstation, so we don't make any trade. So now we will just be observing the markets. Let's observe calls today. See. Havels has made 1 week lows, so it's a stock which we should be adding for further analysis. Havel, because in relatively in relative analysis of stocks, market is at highs and these stocks are at their lows. So here you go, it has broken previous week low and it has made a fresh new week low. So Havels and Muthoot Finance, these two stocks in a rising market, they are the underperformers. Let's do 1 minute chart and observe the market depth. This is what we are going to be doing. I'll also put on news flow in the background. So I'm just scanning for news right now.
not many traders do that. They don't observe it. Observe 1 minute chart and follow the market depth. Try to find patterns in price action. You would have observed that when I am trading, I don't look at charts except for a broader look. Usually I'm focusing on the bid-ask spread over here. I'm seeing what is happening in terms of where are order flows. Like there are some strikes in which there are relatively higher amount of quantity. So market usually goes towards those levels. So and here when say for example at 105, suppose if there was a 30,000 quantity right now and market was not breaking it down, so and you would have seen that for example at 105 there were 30,000 share, market not being able to break that level, you would have seen based on the bounce on the bid ask price. So like see at 106 there is a big order, so market usually trades towards those levels. It's going to break that level. So there are two ways of reading this. At 106 there was a relatively large quantity. So if for a few moment of time, if that order doesn't get reached, so what happens is that people whose algos, those who trade in larger quantities, they usually have an execution algorithm which says like this, that sell 10,000 at 106, and if they don't execute for say 30 seconds, then exit at market price, or they modify the order at lower levels. So those are the algorithms which institutions uses. So when that happens at 106, it was not able to get filled for a relatively longer period of time, so they basically exited they executed that position in the market, which led to price trading lower. So one can observe these levels at which there are relatively higher quantities and see whether market is able to breach those levels or whether or not it is not able to breach those levels. If it is able to breach those levels, so it gives us a hint, and if it is not breaching those levels, then it tells us that most likely like in our puts for example, we were looking at 55 levels, so 55 levels were not breaking, and we were able to spot that because they were relatively large order size at 55 levels, and when market went over there, it immediately bounced from 55.05 to 56 levels immediately. So you would have to observe price action based on the market depth as well as 1 minute chart to see what is happening. In order to observe the markets, this just helps you get a better feel for execution of your orders. Instead of every time entering at the market, you can look at the market depth and position yourself in a conservative manner. Instead of just executing market orders, you can enter limit orders.
I'm just seeing the news flow. HDFC has also made 1 week low. And see the calls and we have to add another stock, HDFC. These are the stocks, despite the market moving in an uptrend, these stocks have these stocks have breached previous week lows. Maharaja Battery is also 1 week high. Private banks, everything is currently at highs. See the spot Nifty. Monthly time frame, Nifty is under control of buyers. On weekly time frame, above 12,960, market is under control of buyers. On daily time frame, above 13,000, we had time frame continuity to the upside. So let's apply open. So today above open, we had time frame continuity to the upside. That is, we had all the time price on all the time frames was under control of buyers. So here one can see if one would have initiated a trade based on that's how I traded today. Basically, I above first 15-minute candle high we entered, and when we made the first I'll repeat it again. When we entered the highs, of course we are not trading futures, but I'm just telling you the concept. If we make the trade above this high, first 15-minute candle high, we hold this trade till the low breaches. This is going to be our level to exit. So we'll keep on holding it,
and once keep on holding it, and once we form a like market, then made a previous candle low was breached. So we did not exit this position because of one reason, because our initial stop is the day's lows. So once market started forming higher high, higher low, higher high, higher low, so we modified our trailing stop to previous candle lows. So at this point of time, our stop loss got triggered in this candle. So after that, there was no trade for us. After that, what happened was we got another trade here with a stop below this candle low, and we modified our stop to this red candle low, but it got triggered, and we then re-entered again when this 15-minute candle broke to the upside. So we held it, and we exited there. This is how we traded today. We had time frame continuity to the upside on all the time frames, because at this point of time in price, market is under control of buyers. On monthly time frame, market is under control of buyers. So we have this long green candle. On weekly time frame, market is under control of buyer above 12,960 levels. And the daily level of approximately 13,002 levels, market is under control of buyers. So today, it would have been relatively easier if one would have focused on buying in the market. But when this issue is that Nifty is at all-time highs right now, and 13,000 is a psychological level, and many folks are also today buying puts aggressively. They were buying the puts aggressively as well in order to hedge their portfolios or maybe speculate on a down move. But either way, we don't know what others' objectives are, but what I can say is that VIX is rising only because there was order flow demand in puts as well. That is why puts were not able to be, they were not relatively easy to trade today, because at every level there was buying coming in. And let's see a call. Reliance has made, I think, new day highs right now. Yeah, it was made a new day high right now. So overall, Reliance is overall flat today. And if we see on daily time frame, I think today is again an inside candle. Yep, so far. Yesterday was an inside candle. Today is again an inside candle. So let's see whether it manages to break it to the upside. If it does that, then it can potentially trade higher. Nifty is up 1% now, and Nifty Bank is relatively outperformer at 2.6%. HDFC Bank at highs. Divi's Lab is an inside candle today. RBL is now at 226. Indigo. We have to see that even though this is an inside, we are currently under control of buyers above 1649 levels, but we have to remember that this inside candle has broken to the downside. So if it was trading, if it would have sustained levels of say 1670-80 levels, it was trading around here.
1682 highs, if it was trading at higher levels, then it could have potentially traded towards 1740 levels. But here you have to see that sellers have again stepped up and inside candle has broken to the downside. And now I'm seeing puts breaking the lows as well. Futures are at highs. See the calls. I think Reliance have broken to the upside now. Yep. So inside candle has broken to the upside. This can potentially trade towards 1984 in the by tomorrow most likely. HDFC Life is less than 2% away from its 52-week highs. Oro Pharma, Shriram Transport, Finance, all at 1 week highs. Dr. Reddy is at 1 week highs. So today has been an overall a great day. It was very tough for us, but it's okay. We have managed to close the day in green. So there you go. It is trading higher now. It has broken the inside candle to the upside, so it can potentially trade toward 1984 or so now I'm going to be switching off the terminal. So there you go. Currently we don't have any open positions. We are up 3,500 for the day today. It was a good day overall. We lost when we bought the puts today and we shorted the calls. That's where we lost. If we eliminate contrarian trade today, I think it would have been we would have been better off overall.
let's now see the news flow. What is happening? चार गुना बढ़ाना अहम है। जिस तरह से एनर्जी नीड्स भारत की ग्रो कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेचुरल गैस की क्षमता को 2 गुना करेंगे, यानी कि करंट कैपेसिटी से उसको डबल करने का प्लान है। तो ये कुछ अहम कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं वेदांता चेयरमैन की तरफ से, जो इनका नेचुरल गैस बिजनेस है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर भी है ऑफकोर्स वेदांता। तो यहाँ से एक बड़ी आपको ट्रिगर लेना चाहिए कि आगे डिमांड में 4 गुना बढ़त होने वाली है और कंपनी इस समय आपको अपनी क्षमता को डबल करने की तैयारी में है। स्टॉक 2.5% की तेजी पर है, दिन के हाई पॉइंट पर है। अनिल जी का यहाँ पर टारगेट 120, 125, 128 का है, जहाँ पर आपको रखनी है नजर। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक शानदार एक्शन रहा बाजारों में। पहली बार 13,000 के ऊपर निफ्टी गया है और होल्ड कर रहा है। यही नहीं, डेज हाई पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर ही क्लोजिंग आती दिख रही है। जो 2 लेवल्स अनिल जी ने आज सुबह आपको दिए थे, वही पर आप देख रहे हैं कि एक्शन आ रहा है इस समय। सेंसेक्स नया हाई, यहाँ पर भी 500 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स भी क्लोजिंग के लिए तैयार है। कंट्रीब्यूशन बैंक्स की तरफ से, ऑफ कोर्स बैंक्स आज मार्केट्स को ऊपर लेके गए हैं। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक बैंक, इन सभी में हमने खरीदारी देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अनिल जी ने कॉल दी थी। 3 टारगेट्स दिए थे, जिसमें से 2 टारगेट्स आ गए हैं 1950 और 1975 के। अब देखते हैं 2000 की तरफ जाता है या नहीं, पर इन सभी दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी की वजह से मार्केट्स में एक्शन रहा है। और ITC, यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन रहा, 2-2.5% की तेजी इस स्टॉक में भी आपने देखी है। अदानी पोर्ट्स आज का टॉप गेनर 4.5%, जिसके ट्रिगर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। और ऑटो स्पेस पूरा का पूरा सेक्टर आज तेजी में रहा। मारुति, आइशर मोटर्स, M&M, यहाँ पर आपने बढ़िया खरीदारी होती देखी है। आज तो हमारे पास मैनेजमेंट भी थी, मारुति की मैनेजमेंट से भी हमने खास चर्चा करी और साथ ही मदरसन सुमी की भी मैनेजमेंट हमारे साथ थी। टाइटन, यहाँ पर थोड़ा पार्टिसिपेशन कम रहा। HDFC थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आई 1.5% की, साथ ही गेल, भारती एयरटेल, ONGC इन स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं, बट ऑफ कोर्स एक बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है कुछ दिग्गजों ने, जिससे वजह से बाजार ऊपर गए हैं। फायदा कारोबार में बात करें तो बॉश सरप्राइज मूवर रहा, 6% की, यहाँ पर 8%, 9% की तेजी आपने देखी है। हाई बीटा फाइनेंशियल्स में RBL बैंक, M&M फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, पीरामल एंटरप्राइजेज, जहाँ पर अभी एक थोड़ा मूव आते हुए दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सभी स्टॉक्स पर आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। SRF फ्रेश लाइफ है, यहाँ पर नजर रखिए 3.5% हो रहा है। बायोकॉन, जिस पर अभी वहाँ पर भी जबरदस्त एक्शन रहा। जुबलेंट फूड, अपोलो हॉस्पिटल्स, ACC, मुथूट, यहाँ पर आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी गिरावट थी। TVS मोटर्स, टाइटन, अंबुजा सीमेंट्स, कोलगेट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। बट अनिल जी, पहली बार 13,000 के ऊपर निफ्टी, पहली बार market has closed. So I have opened my website digitaldradingflow.org and I am checking out the blogs. Here you will